सिर्फ आईआईटी कहने से नहीं होता है। IIT graduates, most of them, in fact, the vast majority of them, वो established corporations में जाते हैं, established कंपनी के लिए काम करते हैं। सो सिर्फ कोई बंदा आईआईटी बैकग्राउंड का है उससे नहीं होता है। टेक स्टार्टअप एक अलग चीज होती है। 0 to 1 जो कहते हैं, like when you launch something and create something from nothing, तो वो फासला उस स्टेज में, like as a tech entrepreneur, oftentimes you have to move. Ideally you want 100% of the information, लेकिन वो तो रहता नहीं है। तो इस्टेब्लिश कंपनी का भी 70% इंफॉर्मेशन के आधार पर निर्णय लेते हैं। जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना नहीं रहता है। लेकिन एक टेक स्टार्टअप में, like oftentimes you have to move with 10%, 20% इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत लोगों के लिए दैट कैन बी पैरालाइजिंग, कि अरे मेरे पास तो सिर्फ 20% इंफॉर्मेशन है, इसके बल पर मैं क्या कर सकता हूँ? आई आई कैनॉट इवन मूव। मैं कुछ भी, लाइक नो मूवमेंट। तो टेक स्टार्टअप एक अलग चीज होती है, कॉर्पोरेट जॉब एक अलग चीज होती है। इन ह्यूमन टर्म्स अगर मेटाफोर प्रयोग किया जाए तो इट्स लाइक डीलिंग विद समबडी हु इज कॉलेज ग्रेजुएट और अ कॉर्पोरेट वर्कर एट 35 years old। वो एक स्किल सेट है। But dealing with a newborn or somebody who is 1 year old or 3 years old, वो अलग स्किल सेट है। That's a rough metaphor I could come up with. तो लेकिन how would you know if somebody is correct for this? तो अब सत्य नादेला तो आईआईटी बैकग्राउंड नहीं है, तो सिर्फ आईआईटी कहने से नहीं होता है। बंदा किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है। इनफैक्ट एक बहुत सेलिब्रेटेड सीईओ फ्रॉम द 1990s, उनका फॉर्मूला था कि वो he would assiduously avoid graduates from big name universities and colleges। वो अवॉइड करते थे उनको। लाइक उनका रहना था कि बल्कि छोटे-छोटे नाम वाले जो कॉलेज हैं, वहाँ के अगर स्टार स्टूडेंट रह चुके हो, अपना लीडरशिप प्रदर्शन कर चुके हो या कुछ किया हो, दैट इज़ बेटर एज़ अपोज्ड टू लाइक एनीबॉडी विथ अ बिग ब्रांड नेम डिग्री। तो उनका वो विनिंग फार्मूला था कि नहीं, आई आई लाइक फॉरगेट द ब्रांड नेम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। हमें वैसे बंदे खोज के दो जो कि उतने नाम वाले कॉलेज में नहीं पढ़े हो, लेकिन जहाँ पढ़े हो वहाँ बहुत अच्छा किए हो, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड हो, कुछ आउटस्टैंडिंग काम किए हो। तो वैसे लोग दे हैव फायर इन द बेली, उनका फॉर्मूला था। आई थिंक ग्रेट वर्कर्स, ग्रेट टीम मेंबर्स could come from any backgrounds, including from top name colleges and universities, but that brand name is not enough, मैं वो कह रहा था। So tech startup, no matter what the background, if somebody has jumped into it, done it, तो एक मायने रखता है कि नहीं, like you have that, like you have a thing for an early stage company। और कभी-कभी you launch a company, you launch a team, अच्छा टीम बना, थोड़ा फंड भी हो गया, काम किया, बट यू डोंट गेट ट्रैक्शन कि सब चीज़ है, साधन स्रोत है, टीम है, लेकिन हमने जो बेसिक प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में चल नहीं रही, लाइक लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट फिट हमें मिल नहीं रहा है। तो वैसे में स्मार्ट टीम्स दे पिवट कि हमारे पास सब चीज़ तो है, वी हैव द टीम एंड द रिसोर्सेज एंड
the will to do something, तो वो pivot करते हैं. And a great example of that is Instagram. Instagram did not start as the Instagram that we know today. It was something very different. तो काम कर नहीं रहा था, तो the team decided to pivot or turn लिया, and then they created what we know as Instagram, and that was the hit, big hit. लेकिन आज भी Instagram जब शुरू हुआ, आज भी if you are trying to build a photo sharing app, तो वो तो you're not facing where things are today because of Web3 and blockchain technology. I think now the winning startups will try to tackle the biggest problems there are. Like आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है, द बिगर द बेटर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कैपेबिलिटी बढ़ गया है. So I think the next 10 years, the most outstanding tech startups, or I think in 10 years, we might see $100 trillion companies every year. वैसी स्थिति आ सकती है. So things are getting better and better in terms of look at the pace of technology, like so much rapid change in so many sectors. एक समय था, this is way before Amazon Web Services, तो to launch a tech startup meant you raised enough money to buy servers. You had to have your own servers on your premises, at your office. So tech startup launch करने का मतलब, you had your servers and these computers for your workers and all that stuff, right? And so you necessarily had to raise a few $1,000,000 just to launch. लेकिन जब क्लाउड सर्विसेज आए, अमेजन वेब सर्विसेज ने शुरू किया, तो वो सर्वर तो नहीं चाहिए. लाइक यू पे मंथली, लो मंथली फी, जितना यूज करो उतना पे करो, कंप्यूटिंग पावर. तो यू देयर वाज दिस न्यू era when like you could launch a tech startup for very little, like a few tens of thousands, right? Or if you're building your own product, तो maybe for nothing, क्योंकि you are building part time, कुछ और कर रहे हैं, और इवनिंग्स एंड वीकेंड्स में हॉबी की तरह प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए. एंड देन यू होस्ट ऑन one of those cloud services like Amazon Web Services, and next thing you know, you have a product and a tech startup, right? So अभी अगर आज कंपनी लॉन्च करके, if you want to go to a $1 trillion valuation faster than anybody who has done to date, आज तक, बाद में करेंगे अलग बात, लेकिन अभी तक जितनी कंपनियां $1 trillion वैल्यूएशन तक पहुंची है, तो $1 trillion वैल्यूएशन पहुंचने का समय उन सब से कम समय में वहां पहुंचने के लिए किस रफ्तार में जाना होगा? A lot of tech startups, वो ईगो इशू बना लेते कि नहीं मेरा अलग रहेगा, लाइक मेरा अलग ब्रांड रहेगा. A lot of them would benefit by coming together. One roadmap that I have in mind is, how about like okay, so you launch your tech startup, you have not raised any money, and you go the all equity merger route with a mothership, with a bigger company with a big vision, and you expect 10 other tech startups to do the same, which means these are these 10 tech teams who all started individually, who are agreeing to merge, do an all equity merger with this mothership, this one company, and then together all 10 tech teams, march, run, sprint to that $1 trillion valuation in record time. I think that's the way to go. Like थोड़ा ईगो को संभाल के, you face the reality कि नहीं, like this is about serving the largest number of people possible. This is about tackling big problems, and for that, we have to come together. तो मेरा कुछ वैसा रोड मैप है. I'm looking for about 10 tech teams. They might have started on their own. They might be pre-funding or raise a little bit of money, but they would agree to merge with my vision to march towards $1 trillion valuation.